दिला दे घर, दिला दे घर, दिला दे घर, दिला दे घर, बना दे घर, दिला दे घर. Oh my God, this is original. दूसरी साइड के एंटरटेनमेंट को बहुत सख्त इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. लिरिसिस्ट होने चाहिए, राइटिंग बिल्कुल फारिग है और कुछ भी सब्सटेंस वाला कंटेंट आई डोंट थिंक पाकिस्तान में है नहीं. I don't know, I disagree because I do agree कि मतलब काम बहुत ज़रूरी है. Like there's so much missing in Pakistani content, but I feel like there's a lot missing in the Bollywood industry as well. काफ़ी हद तक वो saturate होना शुरू हो गई है because you have the same people, the same industry leaders who are running the shows and they're the ones who decide what content goes out there. So you're not really innovating. You're not trying something that's outside the style that exists for Bollywood. I don't agree because if you watch a web series, Netflix, Amazon, not the same team, not the same content. अनकही कहानियाँ, पाताल लोक, to name a few. Really think that when it comes to entering the industry, anyone has that option? Because with Pakistani content, yes, we have a long way to go. Yes, the industry is like not there. But at the same time, you have anyone who can sort of write a script and find a producer, find an investor and sort of jump in. But with Bollywood, you have so many films coming out that only a few will take the spot, right? The ones that have the highest budget, no matter if they're good content or bad content. So you have this monopoly of sorts for Bollywood content. No, if you look at कि कितने हर साल नए राइटर्स स्पेशली आते हैं, डायरेक्टर्स एंड राइटर्स, तो वो बहुत सारे अभी भी वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान से ज़्यादा. पाकिस्तान में भी आप देखें, अगर नाम लेना है तो हुमायूं सईद है, कोई भी है, नए एक्टर्स जिसको कहें कि नया 22 साल का 23 साल के लड़के लड़कियाँ राइटर्स डायरेक्टर्स कितने हैं. लेट्स से आपने बॉलीवुड फिल्में बंद कर दी कि हमारी फिल्में ज़्यादा चलेंगी. सो इट्स फूलिश टू क्लोज योर आइज टू अ लीडर. So you need that competition for us and our content to improve. But you can compete. You can have Pakistanis competing with Bollywood content. We're different worlds. We're different. सिर्फ वही एक अरीना नहीं है. There are web series, like short films. आप उसमें innovate करें. I don't think there's a proper comedian in Pakistan. See, if you compare it with BB Wines or Kapil Sharma. On mainstream level, on mainstream. मीडिया की बात करें ना. Even when you're talking about Punjabi theatre or stage shows, वो बहुत there's a very tiny. ऐसे Indian content में भी है. ऐसे no. There are so many songs. There are so many songs which have double meanings. They are vulgar. वो तो है कि मतलब ऑब्वियसली लाइक हनी सिंह हो गया या बहुत सी चीज़ों के डबल मीनिंग सॉन्ग्स हैं, सब कुछ है. यू का दैट्स नॉट फैमिली ओरिएंटेड. बट मेन स्ट्रीम की जो बड़ी क्रिटिकली जो चीज़ हिट हो रही है वो क्या आप मेन स्ट्रीम है बाकी या एक पर्टिकुलर एक पोर्शन है वो देख के कहता है कि बॉलीवुड की सोशल मोनोपोली हमेशा पाकिस्तान में रहेगी. Even though it has evolved recently, but हमारा बहुत I guess it's from the evolution of Pakistan, since pre-partition and everything. हमारी cultural इतने कोई differences नहीं हैं. There will always be we have an undying love for Indian culture, and you see it in our scripts, you see it in our dramas, even Pakistani dramas. So I don't think कि वहाँ कोई end उसका कोई sooner कोई end है. Exactly, because relatable है. हम वही हैं, like you said कि culturally we are same, we are the same, because हम वहीं से आए हैं. बस अलग कर देने से, लैंड अलग कर देने से तो नहीं चाहिए. अब पंजाबी हो या कुछ भी हो जो मेन कंटेंट है तो वो तो सेम है. आई डोंट थिंक वी कैन बी अपनी आइडेंटिटी जब तक बंदा नहीं देखेगा. लाइक वी डोंट एज पाकिस्तानीज हमें अपनी आइडेंटिटी नहीं पता या हमने क्या कंटेंट बनाना है. तो ऑब्वियसली आप कुछ भी देख लें कंटेंट वाइज या आपके कोई इवेंट्स होते हैं तो वी आर सो मच इन्फ्लुएंस्ड बाय. I don't know, movies की बात करें, हम लोग ड्रामास की बात करें. What I know, what I heard is that कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामास बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं बाहर और हमारी उनकी एक्टिंग क्लासेस में हमारे ड्रामास दिखाए जाते हैं. You have to play by the rules.
rules until you're in a position to change them. अब social monopoly की बात जब करते हैं, when our celebrities have that international exposure and hold, जैसे आप आद रज़ा मीर and Sajal have a good standing in like UK or Dubai. So you know जब आप दुबई के अभी एक recent events के कोई posters आ रहे थे, so where you'd only see Shah Rukh Khan or Hrithik Roshan, you do have these Pakistani names. So this monopoly will break once we amass that influence. But it's foolish again to say कि बस हम उसको बंद कर दें content को तो हम जीत जाएंगे. I agree. बैन करने से आप बंद करने के तो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट ना कि बंद कर दें तो मे बी होता ऐसे है ना कि आपका जब इंडिया एक जगह आपकी लगी एक स्क्रीन पे आपकी इंडियन मूवी लगी हुई है दूसरे पे पाकिस्तानी लगी हुई है तो यू नो लोग ऑटोमेटिकली इंडियन में घुस जाते हैं चाहे वो बकवास मूवी हो बिल्कुल ठीक है एंड इफ यू एक्चुअली लुक एट मतलब the reason why I'm saying the process has already started is क्योंकि कोविड के बाद से बॉलीवुड मूवीज़ नहीं आती है पाकिस्तान में. आपके पास सिनेमा के लिए लोग देख लेते हैं. आई एग्री विद दैट बट एट द सेम टाइम द सेम स्टैंडिंग दैट दे हैड फॉर बॉलीवुड मूवी कि हमने सिनेमा में जाके देखनी है बिकॉज बॉलीवुड इज ऑल अबाउट लाइक पीपल गेटिंग टुगेदर वाचिंग दैट मूवी टुगेदर राइट. यू डोंट वॉच अ बॉलीवुड मूवी. जितना टाइम मिला पाकिस्तानी इंडस्ट्री को उतना टाइम नहीं मिला और अब चूँकि ड्रामाज में अच्छे ड्रामाज आने शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के फिल्म प्रोडक्शन में भी पाकिस्तान अब थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले रहा है. बैंस ही बहुत रहे हैं पाकिस्तान में इंडस्ट्री में 90s में दोबारा ये रिवाइव होना शुरू हुई इंडस्ट्री और अभी जाकर थोड़ी सी इवॉल्व होना शुरू हुई है. और वो भी इसमें एक मसला ये भी आ जाता है जब कल्चर डिप्लोमेसी को गवर्नमेंट्स रोकने की कोशिश करती हैं. एंटरटेनमेंट को जब आप पॉलिटिक्स के साथ मिक्स कर देते हैं ना तो उसका एक बहुत बैड इम्पैक्ट आता है और सोसाइटी हमारे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अभी तक डेवलप ही सिर्फ ये इंडस्ट्री को देख के फिल्म इंडस्ट्री के साथ हो रहे हैं. इंडियन आप अगर देखें तो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है. हर इवल में आपको पाकिस्तानी दिखा देंगे या बता देंगे कि ये हो रहा है. शाहरुख खान, सलमान खान, करीना कपूर, ऐश्वर्या राय का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में इर्तुगरुल या हुमायूं सईद से ज़्यादा है और हमेशा रहेगा. ऑब्वियसली मुझे लगता है रहेगा क्योंकि रिलेटेबल ज़्यादा है. जो वो चीज़ें कर रहे हैं ऑन टीवी जो लोग देख रहे हैं ऑब्वियसली वो वही करना चाहते हैं. जो इर्तुगरुल है या इस तरह के जो शोज़ हैं वो यू कैन नॉट मेक देम कि यार आप ऐसा होगा मैं बड़े हो के. अब एक जो शाहरुख खान एक चीज़ कर रहा है कल हो ना हो या कुछ भी हो बाहें फैलाता है और गाने गा रहा है तो ऑब्वियसली एक ह्यूमन साइकी है कि बंदे को वो करना है घोड़े पे चढ़ के लड़ाई नहीं करनी. सो ऑब्वियसली अगर उनकी जगह कोई और होते तो वो भी आई टोटली एग्री विद यू. They will have influence all their lives. मतलब ब्लिंग ब्लिंग और एक ह्यूमन साइकी है. प्लस साउथ एशियन कोई बच्चा जब बच्चा होता है तो ऑब्वियसली वो कोई बहुत आर्ट्सी या बहुत कोई वो एक बड़े लेवल पे चीज़ नहीं देख रहा होता है. आप ये कहो कि नहीं यार तुमने ये होना है बड़े हो के यू हैव टू बी लाइक दिस ही विल बी लाइक मैन जस्ट शट अप कि मैंने ये नहीं होना. I'll start here and I disagree because I'm in the business also. मुझे लगता है जो influence की बात आप कर रहे हैं ना it's temporary in the business. हम लोग शाहरुख खान उनको याद करते हैं because maybe we belong to an age bracket जहाँ पे तब वो बहुत relevant थे. It's all about relevance in the business. Now Alia Bhatt or Disha Patni would have a lot more influence than let's say Kareena Kapoor, which is a fact because they're the current ones. आपको ये influence is basically down to whoever's popular at that point in time. how you target your audience, like how cleverly you market it, how cleverly you target it. आपसे कहा था कि हमारे जो ड्रामास बन रहे हैं और यू से कि जी यू नो कोई तुक नहीं बनती उस कंटेंट की जो मैं आपको बताई थी कि चलता किस तरह है बिकॉज हमारे यहाँ पे डिमांड है ना और वो चीज़ जा रही है. जैसे यू नो आप रिलेट कर सकते हैं ना आपका जितना भी यू नो आपकी जो भी टीवी देखते हैं जितने भी हमारी लोअर क्लास मिडिल क्लास सो दे कैन रिलेट टू दैट ड्रामा. अब आई से सी पीपल गो अगेंस्ट क्या दिखा रहे हैं पाकिस्तानी कॉन्टेंट में जादू भूत यू नो नीली. if you watch वार परवाज़ जुनून आई वॉच सो मेनी फ्रेंड्स इन आर्मी दे कैन नॉट रिलेट जो उसमें दिखा रहे हैं वो कुछ भी नहीं है. I could not relate with परवाज़ जुनून. That is the requirement of time. They have to glamorize it कुछ करके ना. फैक्ट्स तो आप सही दिखाओ जिस तरह बात कर रहे हो ये तो नॉर्मल. कौन इस तरह सीओ बात करता है कि इंग्लिश में बात करे. Screenwriters have a long way to go, and until you can nail down the screenwriting process, you're not going to be able to get out there. But having said that, that doesn't mean that if you don't have that celebrity status, you can't make it in the industry, and you can't have your name out there. So saying that we can't ever compare to Bollywood, I think that's. जो कंटेंट हम देखते हैं उसे हमारा कल्चर ज़्यादा रिलेटेबल है.
आई रिलेट टू इट क्योंकि मेरे हिसाब से आई कैन सी वो आप डायलॉग को इस तरह लिखते हैं कि आपके पाकिस्तानी जो लेट्स से यू कैन टॉक अबाउट पाकिस्तानी एड्स, यू कैन टॉक अबाउट पाकिस्तानी जोक्स, थिंग्स दैट आर रेलेवेंट टू योर रीजन. तो आप जब उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो इट्स मोर रिलेटेबल टू यू, द कैरेक्टर मेक सेंस टू यू. लेकिन जब आप बॉलीवुड कंटेंट देखते हैं तो इट्स नॉट ऑलवेज एज रिलेटेबल. ठीक है, बॉलीवुड हैज़ इन्फिल्ट्रेटेड आवर the way we think about our lives. It has a huge impact on our culture. I want to ask, where does Pakistani culture come from? Exactly. It's a combination, yeah. Yeah, it's an amalgam of both the cultures. It was a subcontinent culture. It wasn't really Pakistani culture or Indian culture. So basically, what you're saying is कि Pakistani dramas या जो भी industry है उसमें जो culture दिखाया जा रहा है, it takes its roots from Bollywood because it is apparently the same culture. From Bollywood, but it's also more like you see your characters bringing a dimension to it जो आप Bollywood characters के साथ नहीं देख सकते. And the reason for that is because they come from a totally different set of expectations. आप इस्लाम को अंदर ले आते हैं उसको, ठीक है, Bollywood also has Muslim representation, but the way that Pakistani culture is set up, you see those suffocations, you see, आप खुदा के लिए को देख लें, आप बोल को देख लें, आप you see actual that is a story I can relate to because I see it happening in front of me. The political situation, जो मसले होते हैं हमारे आम आदमी के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए जो मसले होते हैं, you see those. With Bollywood, I get it, but it's a whole different country with a whole different political, socio-political standing. So the fact that we generate the sort of content that we do ड्रामों में, it's because it is relatable. आपके घर में बहू यही बातें हैं, इसीलिए वो चल रहा है, इसीलिए वो सेलिब्रेट भी होते हैं, इसीलिए सेलिब्रिटीज बनते हैं, because that content is relatable. In my experience, I think Bollywood is not relatable. जब आप शाहरुख खान या उनकी फिल्में देखते हैं, रावण या फैंटम, it's either larger than life production where people just go wow और आपका jaw drop हो जाए, आप गाने देख लें धूम के या whatever, because that's the production value that they have. Or there's stories like Mirzapur. It's not relatable to us. Maybe someone in India, sure. The content is not relatable. It's a fantasy I think we buy into. Yeah. Either larger than life or the glamorous. What about language? We see the people, we're like, okay, we know people who look like that. Yes. But that doesn't mean What about the upcoming web series and short films, like little things on Netflix? That's very relatable. Indian content कहीं से भी relatable नहीं है, कहीं से भी relatable. Like what about little things on Netflix? That's very, very relatable. But no, little things, they've moved in together and the things they're showing. So I don't think that's relatable to our society. Have you seen those Star Plus के dramas जहाँ पे they're loaded with sarees and tikkers and jewelries? Even the Indians can't relate to that. I'm so sure. I agree that is just exaggerated, but the movies are also exaggerated. Like कभी खुशी कभी गम में he's coming helicopter से और उतर के और था करके आवाज़ ये कहाँ होता है? I don't know. इंडिया में तो मुझे नहीं पता है कहाँ होता है. I think for us Bollywood वो हम लोग इसीलिए बात भी जब off screen भी करें, we so in awe of that because of the fantasy they create. It's so larger than life. ड्रामे तो हमारे घर में चलते हैं और actually अगर मैं कहूँ मैं नहीं देख रहा, it's a lie. घर में अम्मी ने हर वक्त लगाया हुआ है. When I sit down I'm like हाँ actually बहू ने ये कहा था, हाँ वाकई वो देखो वो hospital गए हैं तो पूरा खानदान hospital मिलने आ गया because that is us. yeah, but is that influencing you? Does that influence the ordinary man? Does that influence the audience? Yes. I believe And in the return, dramas are influenced हमारी daily routine से, हमारे उनसे dramas में हम influence नहीं हुए हुए, हमारे ही जगहों से stories उठा के लिखी गई हैं और हम उनसे फिर relate कर सकते हैं, ठीक है? So there's this very nice drama नीलोफर के नाम से जिस पे बहुत लड़कियों ने I still remember my mother who could relate to it and she said कि this is like कि ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी सामने आ गई है निकल के. For example, Netflix India has this Sanjeela Bansali's Hira Mandi. Yeah. Hira Mandi is essentially Pakistani, right? Yeah. So this, I think, fuels into the idea that I presented कि हम Bollywood या Hollywood इसलिए देखते हैं because we buy into the fantasy or the story. It's less to do with us seeking relatability when we go to the cinema. I just want to be inspired and and have a good time. So इसके ऊपर I'd say कि that is somewhat a part of your culture. It was a part of your culture. It is, you can consider it a heritage. That site, Hira Mandi, Lahore, right? तो आप अपना कल्चर अपने तरीके से क्यों नहीं दिखा रहे, अपने अल्फाज में क्यों नहीं बता रहे, उसको बयान क्यों नहीं कर रहे? जैसे मैंने बोला हमने तो बनाया ही नहीं है. Then you give away उस कंटेंट को पहले ही बना के बैन कर दिया जाएगा,
डू यू अंडरस्टैंड दिस? हमारे वो लाइक ही सेड कि माहिरा खान वो स्मोकिंग और वो तस्वीरें बाहर आ गई, हम वी कैन नॉट शो दैट जो हीरा मंडी में जो यू नो हाउ इट इज़, बहुत चीज़ें हमारी बहुत चीज़ें आपको वो पाकिस्तानी कंटेंट पे बैन करके दिखाते हैं, आपकी आधी चीज़ें तो वो काटी हुई होती हैं, आप उस तरह दिखा ही नहीं सकते. सो इंडिया में एंड आई एम नॉट श्योर कि वो कैसी बनेगी, आई एम श्योर ही इज़ अ वेरी ही इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर, बट व्हाट आई एम सेइंग कि उसमें भी बहुत चीज़ें एग्जैजरेटेड होंगी.